Hey everyone, this is Raza, and I'm from Volatics IELTS Vertical, and welcome to Ask Me Anything session. And today we have a great and fruitful session of IELTS, and we have one of my partner, one of my teammate, Asra. So guys, today we're going to discuss about some very important discussion, and we're going to discuss about some very informative sessions about IELTS, the journey of IELTS students, how they're going to start the journey, what is IELTS preparation, how does IELTS coaching look like. And I'm holding 8+ years of experience, help multiple students to get the desired bands in the very first attempts. So I'd like to introduce Miss Azra. Okay, hello everyone. My appellation is Asra, and I have been working as an IELTS trainer for the 5 years, and I have experience in both teaching IELTS. And apart from that, I have also completed my graduation, post graduation. So, anything that you have related to IELTS, any queries, any doubts that you have, feel free to ask us. It can be as minute or as big. We are here to help you. Any questions pertaining to IELTS are welcome. Great, thank you so much. So Azra, my first question: why IELTS? Like, why students prepare for IELTS, and what are the challenges they face? Okay. See, IELTS is the stepping stone for anything that you want, which is related to studying or maybe going abroad. So this is the first step. And it sounds as a very challenging task only because it's an international test and students hold a lot of confusion and they have a lot of myth. So that's the reason why IELTS is important. And I do agree to this fact that there are many kinds of tests that have happened or they have come, but the thing is, IELTS is one of the widely accepted tests. So it's very important for you to prepare for it. But don't really worry about the fact that is it going to be a difficult paper. पेपर बिल्कुल भी difficult नहीं है. आपको बस अपनी strategies correctly करनी होती है and it's going to be a cakewalk again. Exactly. So, guys, IELTS journey is very important and very crucial. Why? Because IELTS is not only the exam, it's not only the test, it's the ticket of moving abroad. So, IELTS having two verticals, if we talk about. The first vertical is IELTS academic, people who was planning for study abroad, like going for the graduation or for the masters. So they have to give the IELTS academic. And the second vertical of IELTS is IELTS GT, which is IELTS general, and people who wants to migrate or want to do job in some English native countries like US, Australia, UK, Canada. So they have to give the IELTS general. Okay. अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, so students जो basically होते हैं उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चलती हैं. They have a lot of things in their mind, like where to go, how to proceed further, because जो IELTS की जो preparation होती है, people generally start with talking with their friends or searching some coaching centers, looking YouTube videos, and some other things as well. So, Azra, we're going to discuss what are the basically the challenges students face in the IELTS. As you're having 5 years of experience, so मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप डेप्थ में बताइए कि क्या क्या चीजें होती हैं IELTS जर्नी में और क्या क्या चीजें very important for every one of us who are preparing for the IELTS. Okay, to begin with, सबसे पहला जो चैलेंज होता है, they don't really know which test to go for. या एकेडमिक देना है या जनरल देना है, तो सबसे पहले तो यही आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गिव द जनरल टेस्ट, रादर आपको एकेडमिक देना है. उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि बैंड स्कोर क्या रिक्वायर्ड है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि वो चेक नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी से, ऑल्दो इट्स क्लियरली मेंशन कि आपको क्या चाहिए. अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे क्लियरली मेंशन होता है, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स आर रियली नॉट अवेयर ऑफ इट, दे आर ऑब्लिवियस टू इट. तो क्या होता है कि अगर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपको लेस देन 6 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आपने देखा नहीं था ऑफ कोर्स, तो आपका अगर बैंक स्कोर उससे कम आया तो यू हैव टू अपीयर अगेन. द सेकेंड मिथ इज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी से दे देंगे एग्जाम तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट्स अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टेस्ट. आप कहीं से भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. द नेक्स्ट इज
यू डोंट नो द पैटर्न। अगर आपको आईएल्स का पैटर्न ही नहीं पता है तो ऑफ कोर्स सब कुछ एज अ बॉम्ब लगेगा आपको और एवरीथिंग विल फील फॉरेन टू यू, बट इट्स वेरी एसेंशियल कि आप उसका पैटर्न समझें, थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करें। एंड नाउ वी हैव सम क्वेश्चन बाय आर्यन। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई एक्सपैंड माई आइडियाज if I have, okay, ideas quickly if I don't have much to say on a speaking topic? I'm asking about Q card. Okay, this is a very interesting and a very prevalent question कि क्या बोलना चाहिए। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, तो अगर आप ऐसी चीज भी बोल रहे हो विच इज मोस्टली अनट्रू, इट्स फाइन। द थिंग इज आपको अपने आइडिया, जैसे सपोज अगर उसने आपसे बोल दिया है कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में कुछ बताओ और आप इंटरनेशनली कहीं गए ही नहीं हो, तो इस टाइप पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम सर मुझे नहीं पता ये क्या है, प्लीज कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट पॉसिबल। इन Exactly. दीज टाइम्स व्हाट यू कैन डू Mhm. बेस्ट इज टू मेक अ स्टोरी। Mhm. रिमेंबर, ये कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गिव मोर। जैसे हम बचपन में फेंकते नहीं थे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, बट मेक श्योर Exactly. कि वो कॉन्टेक्चुअल है, जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आप बोल रहे हो। एंड अगेन, क्योंकि बहुत ही जनरल आइडियाज होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट टू से। WH स्ट्रैटेजी का आप यूज कर सकते हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एंड Exactly. दैट्स हाउ यू कैन Mhm. एक्सपैंड ऑन द आइडियाज। आर्यन। एग्जैक्टली एंड मैं इसमें कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। बेसिकली जो ये आपके क्यू कार्ड्स होते हैं, दीज आर सिनेरियो बेस्ड। सो जब भी आप क्यू कार्ड के लिए अपेयर हो एग्जाम में या प्रैक्टिस करें, तो कनेक्ट विद योर रियल लाइफ सिचुएशन। लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट, ही रिसेंटली अपेयर फॉर द आईएलटीएस एग्जाम, और उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू यूजुअली विजिट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन दैट place, and how it distract your your study things and working things as well. So student जो था हमारा, that is well prepared, and he said that the place which I usually visit, that is a coffee shop, because वो coffee shop जाता था. there are there are some coffee shop nearby his surroundings. So he generally create the answer, he construct the answer, and he speak very well, and he got good bands as well. So yeah, these are some strategies which हम अपनी classes में भी बताते हैं अपनी, there are classes going on, so Monday to Friday, and we have a lot of batches going on. So students आते हैं, उनकी यही query होती है क्यू कार्ड से लेके related. So yeah, we help the students accordingly. And that is very interesting question, Aryan. We have a question from Aryan Khan, and which we already addressed his question. Okay. Yes, let's move on to the next segment. So as we got a question on the chat part on the YouTube, now we discuss about Asra, the complete segment of IELTS speaking part 1, part 2 and part 3. So basically जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत सा मिथ होता है कि हमें इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, या ग्रामर अपने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी बोलनी चाहिए, या फिर हम न्यूज़पेपर बोल बोल के रीड करें. तो what are the suggestions, or what are the tricks you want to give to our all the IELTS aspirants who are watching YouTube at the moment? ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन सिंपली, अगर आप कोई ऐसे हो जिसको बिल्कुल बेसिक इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ इंग्लिश में और आपको बिल्कुल समझ में, मतलब आपके समझ के बाहर है वो बिल्कुल, तो Mm-hmm. इस ओनली इन दिस सिनेरियो, यस, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज फर्स्ट। एटलीस्ट आपको बेसिक्स पे तो बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आईएल्स में क्या होता है कि इन द स्पीकिंग सेगमेंट आपको अपने ओपिनियन भी देना है, आपको काउंटर फीड भी करना है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें यू एक्चुअली अग्री विद द एग्जामिनर, तो आपको उसको उस तरीके से पिचन भी करना है। ऑफ कोर्स उसमें आपको प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। सो इन सिनेरियोज वेयर यू डोंट नो एट ऑल एनी बेसिक ऑफ इंग्लिश, यस, तब आपको इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। Mm-hmm. बट अगर आपको समझ में आती है इंग्लिश, आप बोल सकते हो, अच्छे वर्ड्स आप भी यूज कर सकते हो, जैसे एवरीडे कॉन्वर्जेशन आप कर सकते हो, तो Mm-hmm. यू डोंट रियली हैव टू गो फॉर एनी इंग्लिश क्लासेस। यू कैन Mm-hmm. जस्ट ज्वाइन, इवन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। इसमें क्या Okay. होता है कि हमारे बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 से 6। वी Exactly. एक्सपोज यू टू एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप Exactly. जो है दूसरे बच्चों से बात करते हैं, सो इट विल Exactly. हेल्प यू इन योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। Mm-hmm. एंड देन Mm-hmm. बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स देयर, it will help you with building your own vocabulary. So yes, to answer your question, if you don't know the fundamentals of English, you have to go for a language class.
If not, then of course you can go ahead and just join the IELTS classes. ओके, आजरा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ या मैं पंजाब मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज, ओके, जो लोकल लैंग्वेज होती है। अब वो लोग बेचारे ना बहुत स्ट्रेस्ड अप होते हैं, वो काफी रिसर्च करते हैं एंड उनको चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि यार हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो रीजनल बैकग्राउंड से होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, राइट, तो इनके लिए क्या सजेशन है, इनके लिए व्हाट यू लाइक टू गिव द ओपिनियन ऑन दिस? Okay. If you come from a regional background where अगर इंडिया से तो of course आपका vernacular language English नहीं होगा, which is understandable. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो या आपको बिल्कुल, मैं अब लाइक इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक एवरीबडी हैज इंटरनेट और उसका आप टू द बेस्ट यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से गोइंग अब्रॉड, ये तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू रिफाइन योर लैंग्वेज। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बोलते हैं तो ऑफ कोर्स हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, आइडिया जनरेशन की प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ इस वजह से होता है बिकॉज यू हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू विल स्पीक, अब अगर आपके पास कोई भी नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कम टू अस, वी कैन टॉक टू यू, या फिर कोई ऐसा दोस्त ले लो जो आपसे बेसिक तो कम्युनिकेशन करे ताकि एटलीस्ट यू हैव सम नॉलेज। बट अगेन, basics of grammar is imperative. If you cannot really speak, imagine not knowing a language and going to a particular country जहाँ पे वही language predominantly बोली जाती हो, you will not be able to survive, right? So these are certain things. Start slow. Basic English learn करो, उसको बोलना start करो, basic questions पे थोड़ा learn करो. You can start reading a book, you can start watching podcasts. These are the things that will actually help you. Sir, I have a question for you. आप अपने स्टूडेंट्स में आपने सबसे ज्यादा क्या देखा है? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे एक्चुअली फेस चैलेंजेस विद? ओके, बेसिकली जो स्टूडेंट्स मेरे पास जो मैंने कैटर करे हैं इन लास्ट 8 years ऑफ जर्नी, उनके उनका सबसे ज्यादा यही जो कंसर्न रहता है रिलेटेड टू स्पीकिंग पार्ट, दैट सर कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, बिकॉज वो काफी रिसर्च करके आते हैं और उनके कुछ माइट बी देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑलरेडी आइल्स दिया होता है, तो they got nervous about it. They don't know whether to start, from where to start, because yeah, they have a dream and how to सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज रहती है कि how they are very hungry about their dream, right? कि हमें आइल्स बस जल्दी से करें तो हम आगे का अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, राइट? सो बेसिकली द थिंग इज दैट व्हाट वी डू हियर एट वॉलिडेक्स, और वॉलिडेक्स में हमने जो चीज वी फॉलो द एथिक्स, वी फॉलो द रूल्स दैट जो भी स्टूडेंट है we cater them very in a way so that they can prepare accordingly. Let's give an example. हमारा जो भी IELTS के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है, तो we first conduct one IELTS simulation test which is a replica of real IELTS exam, right? उससे हम एक आइडिया लगता है कि कैंडिडेट का अभी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश कितना स्ट्रांग है. If you talk about speaking, we focus on communication skills, कितनी अच्छी communication skills है, right? On the basis of that, we start the journey, right? So there are some factors which involved in IELTS. Like हम ऐसे नहीं कि सीधे IELTS से start करें. If anyone is lacking the speaking section, then हम लोग basically start करते हैं IELTS VNS, which is voice and accent, which gives a clarity that how to represent themselves in front of the examiner. क्योंकि IELTS बोलने के ऊपर ही मैटर नहीं करता है, how you're representing yourself in front of the examiner. ये मैं अपने काफी स्टूडेंट्स को बताते आया हूँ, right? And this thing really work, right? So this is very a basic ethics which we follow in our IELTS classes. Okay. Wonderful, wonderful. Yeah. Now I have another question for you. Yeah, Can you ask. tell everybody basically pattern क्या है IELTS का, so that they have better understanding? And let's also talk about the different modes they can appear the test for. So pen and paper, computer based, and how can they actually decide कि किस mode पे they should go for? Exactly. तो जो फर्स्ट IELTS सेगमेंट है आपका, that is IELTS academic, जिसके बारे में I already mentioned about it. Okay. IELTS academic and general. So I bifurcate in two segments, two verticals: IELTS academic and IELTS general. Okay. So time frame similar होता है, 4 modules, 4 skills होते हैं: speaking, listening, writing, and reading. Okay. So if we talk about the mode, there are 2 modes. One is PBT, which is a paper-based test,
and the other one is CBT, which is a computer based test. So basically paper based test में क्या होता है कि student needs to visit physically to the center and give the exam. Okay, in the February 2025, there's a new rule has been applied. एक नया रूल आया है. पहले इसमें क्या होता था पेपर बेस्ड टेस्ट में लोग पेंसिल से जो कैंडिडेट्स होते थे दे राइट with the pencil with the exam if you talk about the writing and reading. Now from February 2025 they have to use the pen. तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया क्योंकि पेन में क्या होता है दे समथिंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक or right they miss any word so they need to cut it, but when it was a pencil they got an option for the rubber so that they can erase it and they can complete the assignment, complete the exam. Okay, so पेपर बेस्ड टेस्ट में एक ये चीज होती है मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा जिनकी राइटिंग यू नो हु आर यूज्ड टू राइटिंग सेक्शन लाइक जिन्होंने हमेशा पेन या पेंसिल यूज करा है तो दे विल गो फॉर पीबीटी एंड सीबीटी इज फॉर कंप्यूटर बेस्ड. ओके, CBT is something very interesting. Okay, computer based test क्या होता है all the 4 sections आपके एक ही दिन में होते हैं स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग और रीडिंग एंड जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें 2 डेट्स मिलती हैं. LWR होता है मेन और फिर स्पीकिंग की डेट मिलती है और आपको एक ऑप्शन मिलता है where you can select the date previously prior or after the LWR. लेकिन CBT में क्या होता है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके चारों एग्जाम्स एक ही दिन होते हैं. Start from speaking and then LWR, and it also depends upon the availability of the IELTS aspirant. Okay, अब मेजर डिफरेंस एक तो हमने ये पता चल गया है. दूसरी जो डिफरेंस होता है वो ये होता है पेपर बेस्ड टेस्ट में रिजल्ट्स आपको 7 days में आता है. Earlier it was 13 days, now it's 7 days. And if you talk about computer based test में आपको रिजल्ट्स within 1 to 2 days में आ जाता है जैसे कि IELTS में है. Okay, now CBT वो लोग थे वो कैंडिडेट्स थे who are good in typing speed, who are good in multitasking because in computer based you need to appear the exam on the official website of IELTS and you have to appear the exam. इसमें क्या होता है एक टाइम फ्रेम होता है, right? So if someone is appearing for writing task in CBT, so there are 2 tasks होते हैं, writing task 1 and 2. अगर उन्होंने within the time frame नहीं करा then portal will be closed. So the people, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि CBT वही लोग करें जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, right? So yeah, so this is difference between the CBT and the PBT, and these are the 2 types of IELTS. Okay, now the second thing is IELTS academic and general. तो बेसिकली एकेडमिक जर्नल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एक तो रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और एक राइटिंग टास्क 1 में डिफरेंस होता है. राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक में पाई चार्ट डायग्राम आता है and for academic, and if you talk about GT general writing task 1 you get a formal or informal letter. बाकी सब चीज सिमिलर रहता है, पैटर्न भी डिफरेंट रहता है. उसमें भी ऑप्शंस PBT CBT होता है, इसमें भी ऑप्शन PBT एंड CBT होता है. Yes, Azra? Okay, all right. The way of explaining everything. Now coming to the individual portions, सर आप मुझे बता सकते हैं कि रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, हाउ कैन द स्टूडेंट्स रियली प्रिपेयर, या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो वो यूज कर सकते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पेन एंड पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड, इफ देयर इज एनी डिफरेंस एट ऑल. Okay, see, reading, yeah, very interesting question. Reading बहुत से students होते हैं जिनको challenges होता है reading को लेके, because reading में तो क्या होता है सबसे बड़ी challenge होती है long passages. Okay, अब काफी कैंडिडेट्स होते हैं क्योंकि हर कैंडिडेट का एक डिफरेंट ओवरव्यू होता है, एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, राइट, टू कंप्लीट द रीडिंग टास्क. ओके, हमारे पास जैसे कैंडिडेट्स आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि जैसे आप लोग ने कुछ रिसर्च करी, काफी के स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर अवेयर अबाउट इट कि रीडिंग में क्या करना है. सो एवरीवन हैव डिफरेंट ओपिनियन. ओके, सो I will just tell you a simple one of the basic strategies तो बहुत सी हैं, ट्रिक्स भी बहुत सी हैं, but I will just tell a very basic strategy. First, we have to mark the keywords. Like, let's take an example. Okay, reading section, the types of questions which we come, one is MCQ, one is fill in the blanks, one is true, false, right? So let's take an example of fill in the blanks. मतलब reading में कोई क्वेश्चन आया है fill in the blanks and you want to do it. So सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो होती है वो है स्किम एंड स्कैनिंग. काफी लोग को पता नहीं होता है
but skim and scanning is one of the strategy, and marking the keywords, because रीडिंग सेक्शन में कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, स्किम एंड स्कैनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं. हाउ टू डू इट, हाउ टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी, हाउ टू डिलीवर दिस skills, for this you need to, I will ask the students to join our one-to-one demo session where they get a personalized, uh, insights about uh, applying these skills and learning these kind of skills. Okay. पेन एंड पेपर बेस्ड में बेसिकली रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, पेन एंड पेपर एंड सीबीटी में. ओके, पेन एंड पेपर में फिर से वही चीज बोलूंगा आसरा जो पहले मैंने बोली थी, पेन एंड पेपर वही लोग करें जो लोग हु आर good in reading and reading thoroughly, like who are good in reading in newspaper and all, and try to figure out the answers. And CBT में हमें क्या होता है, basically again it's a time duration, it's a portal there, and you have to read the left section and you get the right section, some options, fill the blanks, true, false, MCQ. तो मैं वही बोलूंगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वही लोग करें, चाहे रीडिंग स्किल्स हो चाहे राइटिंग स्किल्स हो, वही लोग एग्जाम करें जो लोग who are good in typing. So this is what I'm going to, I have an opinion about it. Okay. Yes. Any other question, please ask. We have a question on YouTube. The question is from Shahzad. Shahzad has one very intriguing question. He's asking, how can I balance all tests, that is listening, reading, writing, and all? Okay. Shahzad, that's a very nice question. That's a nice question. That's an interesting question. Yes. See, while preparing, I would not suggest कि तुम सब कुछ एक ही साथ में करो कि मैं एक दिन बैठूंगा और मैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ कर लूंगा. When you have time, जब आप prepare कर रहे हो, I would suggest go with things that are within your control. जैसे reading है, ये आपको individually करना है. Listening है, that is something that you have to do again individually. Writing हो गया. But for modules like speaking, you will definitely need someone who can guide you. अगर आप खुद से prepare करोगे, तो मतलब the possibility is very high कि आप खुद से ही बोल रहे हो and you will not really find any error. But if you speak with someone who has better knowledge, like is more proficient, वो आपको actually better guide कर सकता है. Exactly, because you will be, with the proper guidance. Right. Because IELTS, there are many students, Azra, हमारे पास तो कितने students आते हैं, we take a demo and they have, half piece of information. Okay. So guys, as I mentioned earlier, don't consider as a competitive exam, consider as a, first ladder of, for your study abroad or moving abroad. So having a expert guidance and expert opinion that will really, give a embark and really help you out to, get the desired band. क्योंकि हमारे पास जो candidates आते हैं, they done one attempts, multiple attempts exam देके आते हैं, but they're not able to get, the magical band, which is 7+ band, which is required. So yeah, so these are the challenges which students face, and what I will recommend and suggest, always have expert guidance. I think that is, the smart decision. Yeah, Azra? We have a lot of students, having similar kind of challenges, and we help them accordingly. Okay. So, yeah, Azra. So, any other question you want to discuss? Any other point you want? There's one more question on YouTube. Nitish पूछ रहा है कि sir ma'am, I have given IELTS 3 times, but I always get reading में 5 band score. Is there any other exam or any other way that I can prepare better? Okay, so but that's an interesting question. I think he's asking about the alternate of IELTS, right? Okay, so yes, there are multiple alternatives of IELTS. We talk about TOEFL, we have PTE, and we have language cert. So I would say there's one of the newly, and the most trusted exam, of which is the alternate of IELTS, which is language cert. Okay, and this is very applicable in the top universities, many universities in UK, Australia, New Zealand, or Ireland, and some other places as well. Okay, now थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है. जैसे हमारे IELTS में लिसनिंग जब टास्क स्टार्ट होता है तो उसमें एक बार प्ले होता है लिसनिंग, बट इन लैंग्वेज सर्ट इसमें आपको यू गेट अ ऑप्शन टू लिसन द रिकॉर्डिंग ट्वाइस. तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है. इसका जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज वैलिड फॉर 2 years एज कंपेयर टू IELTS, ठीक है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग thing in language cert, that is that you have an option to visit the center
and give the exam, and you have an option to give online as per your convenient place. Okay. मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज सर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने भी कुछ स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी किया था एंड वी गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे जो नॉट एबल टू गेट द डिजायर बैंड्स, दे नीड 7 bands but they got stuck in something 5 and 5.5, but yeah, they got an option for language cert, now they being no, in their desired country. So अगर कोई प्लान बी देख रहा है, ऑप्शन बी देख रहा है, जैसे आइल्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स फर्स्ट गो में नहीं क्लियर कर पाते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं, देन दे कैन गो फॉर द लैंग्वेज सर्ट। एंड लैंग्वेज सर्ट का जो हमारा है, दैट विल बी शोइंग इन द बैनर itself. You can contact them, you can discuss more about it, about the language cert. अगर कुछ और information जानना है, आप directly contact कर सकते हो। Whatever the queries you have, I'm sure उनकी जो team है, they will address your queries accordingly. Right, Azra? Right, that's correct. We also have another question. SMS Fun say, he's saying, hello ma'am and sir, I am Monica from Chennai. I'm looking for MBBS and abroad, ma'am, but the fees is like 5 to 6 lakhs per year. Okay. See, the fees, we can definitely help you with the information related to this, but the thing is that we are not study abroad counselors. Exactly. We are actually IELTS trainers. So Exactly. if you have any information related to study abroad or इससे related आपको कुछ भी information चाहिए, we have our expert counselors. You can get in touch with us and we can definitely tell you all the alternatives that you have in a limited budget that you have at the moment. Yeah, our number, हमारा जो number होगा, our number is you can see on the chat bot, or you can visit at our website WalletX, and you can connect with our counselor. The counseling is absolutely free. Whatever you question you have related to your study abroad program, you can just connect with our counselors and ask them, and I'm sure you get a positive response. You get a help from them itself. Okay. Yeah. So yeah, you can contact us We have accordingly. another question. It's from Ravi Kumar. He says, hello sir, what is the cost of IELTS exam and does it help us to get admission in cities like Malaysia and Singapore? Okay, so he was asking about the examination fee of IELTS. That is 18,000, and you can book the IELTS from with us only. We are the official partner of IELTS as well. So it's the fees is in Pan India. It's similar. Okay, it's 18,000, and still you need any help with the preparation, or you want IELTS, you help in IELTS preparation, IELTS coaching, or mock test, you can connect with us, with our team itself, and definitely we're going to help you out. And also, I want to add my 2 cents here. In places like Malaysia and Singapore, yes, predominantly you will have to give IELTS or any other exam. That depends upon the university you're applying. But most probably, क्या होता है कि if you are someone who has had your education in English, so you can definitely tell the university, they can give you something called the language certificate. The university is going to provide you that पूरा medium of instruction English में था. Most of the times universities will still want you to give the IELTS, but sometimes they give you the waiver. So again, अपने counselor से एक बार पूछ ले. You can even get in touch with us. We have expert counselors. We can help you in this regard as well. So most probably, yes, you will still have to give IELTS even if you're applying in Malaysia, but there are exceptional cases. So you can get in touch with us. We can definitely tell you the in depth of how you can get away without giving IELTS as well. Exactly. So now I have another question. Okay, we also have another question from Shehzad. He says, how can I balance all the tests, listening, reading, writing, and all? Okay. I don't understand what you mean by balance because you don't really have a choice, especially जब आप test दोगे तो उस center में तो of course you will not have a choice. But coming to the question again, how to balance it? अगर आपको सिर्फ एक strategy चाहिए जिससे आप actually में सब कुछ learn कर सकते हो, that would be reading books, but reading them loud, like read it very loud, okay? इससे क्या होता है कि when you read the words loudly, तो आपकी pronunciation भी better होती है. और you can and then जब आप बुक्स पढ़ते हो तो of course you will come across words जो कि नई vocabulary होती है, उसको इग्नोर मत किया करो, उसे कहीं पे लिख लो, search for its meaning and try to read it on an everyday basis. इससे आपकी एक तो comprehension power अच्छी होगी,
इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी जो इंग्लिश में हेल्प करेगी when you have to speak in the speaking section. And if you talk about listening section, instead of watching movies, always go for podcast. मतलब अगर आप YouTube पे कोई इंग्लिश का चैनल भी सुन रहे हो तो उसको देखो मत, जस्ट कीप इट समवेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हो. So these are the ways, and you can, like, this is one two ways in which you can tackle all the kinds of modules in the IELTS. So I hope, Exactly. Shehzad, this answers your question. I would like to add something on this, Azra. Okay, how to balance? That is a very interesting question, and ये काफी students के basically आते हैं queries के साथ how we can balance all the 4 modules, because उनका भी कहना सही होता है क्योंकि उनका जो score होता है वो overall देखा जाता है. So yeah, that is a very good question. Okay, so it depends upon your preparation, I would say. मैं उसी में आना चाहूंगा क्योंकि जो बैलेंस करना होता है ना, दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन. हमें इसमें हार्ड वर्क नहीं करना, द स्मार्ट वर्क इज आल्सो रिक्वायर्ड. ओके, बिकॉज एवरी मॉड्यूल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. रीडिंग की अलग स्ट्रैटेजी होती है, लिसनिंग की अलग होती है, राइटिंग की अलग होती है, स्पीकिंग की अलग होती है, राइट. And one thing which I like to add on this, balance it, it's to have a mock test, weekly mock test, right? Which really gives you an idea about it, like where are you going right now? Because IELTS की जो marking criteria है, if anyone have any idea about the marking criteria, I think उसको कभी कोई problem नहीं होगी. So yeah, this is something I like to add on in this the question of Shazad. Okay, any more questions? Anything that you want to ask? You can definitely ask this now. Okay, yes. Now we're going to discuss some few important factors of IELTS. There are few students who ask about, one skill retake. So थोड़ा सा आप बताएंगे क्या होता है इसमें? Okay. But before that, we also have another question on you. We'll have to address it. नवीन पूछ रहा है कि स्टडी प्लान बता दो आइल्स में 7 बैंड 10 अबव आ जाए. ओके, ऑलराइट. तो नवीन देखो, इसका कोई एक वन वे नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं आप ये कर लो और फिर कल आपके बैंड 7 आ जाएंगे. Exactly. राइट. अगर आपको कोई ये भी कह रहा है कि 10 दिन में हम आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देंगे विदाउट इवन नोइंग कि अभी आप किस प्रोफिशिएंसी लेवल पे हो, तो it's just a fad. You will not be able to crack it. But हाँ, there are certain things that you can definitely do. एक तो ये है कि ओरिजिनल में जो ऑथेंटिक मटेरियल्स है उससे प्रिपेयर करो. ओके, वी आर द बेस्ट प्लेस, वी कैन प्रोवाइड यू विद ऑल ऑफ दैट. बट उसके अलावा जब हम इंग्लिश टेस्ट देते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमारा एनवायरनमेंट इंग्लिश नहीं है और हमें ऐसी प्रोफिशिएंसी शो करनी होती है कि अगर हम अब्रॉड जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ओनली survive, but we will be able to thrive in an English speaking environment. So what you have to do is make sure that you are practicing daily with someone, especially speaking in English, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए दूसरा बंदा क्या बोल रहा है. So it's very important कि practice should be done on a daily basis and it should be done from authentic materials. मतलब pattern, yes, you should be aware of the pattern कि क्या होता है pattern, कैसे कैसे questions आते हैं, and this will actually really help you. So this is something that I want to tell you, and we have more questions. Okay, घर नहीं जाऊंगा मैं has a question. Okay. Okay, he's saying कि क्या आप IELTS की कोचिंग पढ़ाते हैं, फीस कितनी है, आप पास करवा देंगे मुझे. All right, see. The thing is, of course, we can definitely help you. पास आप खुद ही होंगे, हम आपके लिए we want to, but we cannot really write the exam for you. But yes, we will definitely try our really best, and we have seen students actually accomplishing their band scores. So if you want, you can definitely get in touch with us. And then we have, okay, we have another question. I want you to answer this. I can see that. Barsat, I hope I'm pronouncing your name correctly. I want an overall band score of 6.5. Please provide me the basic tips. What should I do? So, can you tell something? Okay, tips for 7+ bands. Okay, see, I will like to tell the tips, but that will be a very long discussion, right? So I would say that connect with us, and we will provide you one-to-one demo. For that, we will give you a very brief and precise information, because अगर यहाँ पे हम वो चीज शेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो that will be a really
challenging for every one of us. Maybe someone have more questions about it. So I will suggest and recommend, guys, जो लोग इस बारे में wants to know more about it, connect with our team. Right, we will give you a demo and we will give you the information in more detailed way. Right, which really going to help you out. Okay, तो यहाँ पे हम लोग basically basic information ले रहे हैं. Right, so give you the piece of idea that how Volodex can help you out, what Volodex is doing, and how it can benefit you in every aspect, whether it's IELTS preparation, it's study abroad, or whatsoever which is related to, study abroad things, right? Yeah. Okay. And again, घर नहीं जाऊंगा has another question. Fees बता दो IELTS की. Okay. See, I'm sorry, I'm not authorized to tell the fees. It's better to connect with our admissions team, or you can search walletx.com and go on the join IELTS section, and you can see the fee structure. We have 3 different plans, which is beautifully designed and really helpful, really impactful, which gives the results as well in the past. All right. So आप एक बार website visit करिए, वहाँ पे आपको हर चीज mention हो जाएगी, right? And yeah. And there's another question from Vyom. Vyom Shukla पूछ रहे हैं कि which is the most effective exam for going to a foreign university, IELTS, TOEFL or PTE? Okay, see, that is completely depend upon person to person, because हमारे लिए तो सारे similar है, whether it's a IELTS, TOEFL, PT or language cert. हाँ, अगर किसी को लगता है कि IELTS थोड़ा सा out of the box जा रहा है, really challenging है, then as I mentioned earlier, you can go for language cert. Okay, language cert is something, it's very effective, and you can see the contact number which is showing there. It's in 96700 You can connect with them and you can discuss more about it. Okay, and हमने already mentioned कर दिया कि language में क्या क्या होता है, and they can connect with their team as well and ask more information about it. This is really very interesting, platform. जो लोग IELTS जिनको प्रॉब्लम करता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं आंसर जिनको IELTS में बैंड्स नहीं आ पा रहे हैं. That's okay, that's fine. IELTS is not to check your intelligence level. It's just a language. Okay, so I would recommend and suggest, guys, check language cert. It is really going to help you out for those people who are not confident about IELTS. Okay. Yeah. Okay, and I also want to give my 2 cents to Barsat or Barsat. Okay. The thing is, you want to get an overall of 6.5. Let me tell you some things that you can actually do. एक तो सबसे पहले when we come to the reading section, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग सेक्शन के ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, या Exactly. फिर आप जो है अपने मैच द हेडिंग्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल चीज होती है. द फर्स्ट थिंग इज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फॉल्स और नॉट गिवन में क्या डिफरेंस है. द थिंग इज, अगर कोई क्वेश्चन है, अपनी लॉजिक मत लगाना. अगर आपको पता है कि ठीक है पानी जो है इट इज ब्लू इन कलर, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यू नो इट, but in the passage it says water is red in color and the question asks you water is red in color. तो यहाँ पे इवन तो आपको पता है कि नहीं होता है, still you have to see what is there in the passage and whether it aligns or not. अगर वो वही सेम चीज इवन दो पैराफ्रेज होने के बाद भी बोल रहा है, it's true. The next is false. अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है इन मतलब पैसेज से और क्वेश्चन में, still it's going to be a false statement, चाहे आधी चीज मैच भी कर रही हो. और फॉर नॉट गिवन, यहाँ पे तो बिल्कुल भी अपनी लॉजिक मत लगाना. डोंट थिंक अच्छा हो सकता है कहीं पे हो. If you can't find it in the passage, there is no way that you would know the answer, and hence why it's going to be a not given statement. अब coming to your matching headings, मैचिंग इन्फॉर्मेशन और मैचिंग हेडिंग्स बहुत ही डिफरेंट वे में हम मतलब अटेम्प्ट करते हैं. Exactly. टॉक अबाउट मैचिंग हेडिंग्स, तो हमें क्या करना होता है, हमें इंटायर पैसेज नहीं पढ़ना होता है. और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी मत पढ़ा करो स्टार्टिंग में. गो पैरा बाय पैरा, गो रीड द फर्स्ट पैरा इनिशियली. देखो कि अगर ये कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो ये बार बार यूज कर रहा है, या फिर ऐसा कोई सेंट्रल आइडिया तो नहीं है जो बार बार आ रहा है. यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. फिर तुम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग से उसको देखो कि विच वन एक्चुअली कोरिलेट्स टू द मोस्ट.
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जो आपने सेंट्रल आइडिया अपना अज्यूम किया है एंड द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैज दैट सेंट्रल आइडिया एज वेल and then that would be the matching heading for that particular paragraph. And Exactly. also remember there is going to be more headings as opposed to your paragraphs. तो कुछ हेडिंग्स रिडंडेंट जाएंगी, वो यूज में नहीं आएंगी, तो उसमें आप पैनिक मत होने देना कि ये क्या हुआ, ये हेडिंग्स तो यूज नहीं हुई. दैट्स द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. So this is something that you can do. Sir, even in the listening section, if you have any tips for him, you can definitely give. Okay, for the listening, my guys, see, listening is something, there is no tricks, okay, frankly speaking, because it's all about the concentration, okay. Now, what I recommend and what I suggest, one of the, very beneficial thing of listening, that you should keep yourself in English environment, okay. अगर हम English environment की बात करें तो listen more podcast, because podcast is something, are really helpful. पहले कुछ स्टूडेंट्स आते थे, बोलते थे हम हॉलीवुड मूवीज देखें या इंग्लिश मूवीज देखें. देखो, आप देख तो लोगे, लेकिन फिर जो मेन आपका जो एजेंडा है, जो मेन चीज के लिए आप देख रहे हो, दैट विल बी समथिंग लैकिंग, बिकॉज यू आर मोर इन द कंटेंट. सो आई विल रिकमेंड द पीपल, rather than watching a movies or something else, go for the podcast or for the news, because that is something gives you more clarity about. Because listening jo hoti hai, that is plain in an accent, okay. There's a conversations, either the person is from US, the person can be from UK, recording can be from the Canadian people or from the Australian people as well, right? So we never know about it. So listening के लिए मैं यही suggest करूंगा कि focus more on concentration, okay. And there are few other things which we can discuss about, but उसके लिए I will, मैं बोलूँ उसके लिए एक बार आप लोग डेमो के लिए आइए. I think because क्योंकि demo is something give you more clarity about it, okay. And demo either you can take with Asra ma'am or from me as well, okay. And demo is no, it's not chargeable, it's free of cost. It's 30 minutes of demo, okay. And in demo हम लोग आपकी जितनी भी queries हैं उसको ज़्यादा अच्छे से address कर पाएंगे, okay. Yeah. Yes, Asra. Okay, so we have another question. Mm-hmm. It's from Suruchi. Suruchi says that IELTS का एग्जाम घर पे दे सकते हैं क्या मैम? मैंने 2 बार IELTS निकाल नहीं रहा है, प्लीज हेल्प. ओके, आई थिंक शी इज गिवन द टेस्ट 2 times, बट दोनों टाइम नहीं निकल पाया. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझो कि आपका IELTS क्यों नहीं निकल पा रहा है. क्या लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है? So for you to understand the root cause कि क्यों नहीं आ पा रहा है is very important. The next is, हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. जैसे अगर लिसनिंग में आपको प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में आ रही है, थर्ड या फोर्थ सेशंस में, जैसे थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में, तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन, इफ यू डोंट रियली हैव द मनी, यू कैन जॉइन आवर लाइव सेशंस, ओके. उसमें हम इन डेप्थ एक मॉड्यूल को लेते हैं एवरी सिंगल Exactly. डे, एंड वी टॉक इन डेप्थ अबाउट इट. First thing that you can do is you can definitely join our live session, get a clarity of what is basically the IELTS. 4 to 5 from Monday to Friday, we have our IELTS live sessions. You can join it, it's free of cost. या if you want कि हम personalize आपको किसी एक टॉपिक पे डेमो दे, we have that as an option as well. It's free again. You can just get in touch with us. We have a board of expert counselors and expert IELTS trainer. We are going to definitely help you. And remember, it's free of cost. So you Exactly. can do all of these things. Yes, and guys, there's a big difference in live sessions and free demo. Okay, live sessions is something happening daily basis, 4 to 5, as Azam ma'am has mentioned earlier. इसमें हम आपको थोड़ा सा आइल्स के बारे में बताते हैं, और डेली बेसिस पे दे आर न्यू टॉपिक्स, राइट. उसमें बेसिकली वी हैव स्टूडेंट्स पैन इंडिया, एंड सबके छोटे छोटे दे हैव सम स्मॉल सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज व्हिच वी एड्रेस देम. डेमो क्या होता है? दैट इज अ पर्सनलाइज्ड डेमो व्हिच इज 1-to-1, ओके. उसमें वी डिस्कस इन अ ब्रीफ. सो ये चीज आशा मुझे थोड़ा सा आई नीड टू क्लियर, बिकॉज पीपल शुड नो अबाउट इट, दैट व्हाट वी आर डूइंग. दैट डेमो live sessions is a different concept and demo is something a different concept. Yes. Also, there's one thing that I want to add. A lot of students, they book the test beforehand and then they start their preparation. The thing is that do not book the IELTS beforehand. First, be prepared and then you do that, because ऐसे क्या होता है कि
let's say you are a novice, you have no idea about IELTS, you have no idea about your proficiency. If you book the test, let's say in 10 days, you will have a lot of pressure, or pressure में भी बहुत ज़्यादा time we have observed that students can't really perform. So prepare well, at least get clarity, some clarity about the test, and then start preparing. Once you are actually ready, then you book the test. So preparation time should be enough. और कितना प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आस्क दिस एज वेल कि कितना टाइम चाहिए हमें प्रिपेयर करने के लिए. उसके लिए यू कैन अगेन सीक आवर हेल्प. हम आपको एक्चुअली में पूरा एक बैंक प्रिडिक्टर टेस्ट दे देंगे जिसमें यू कैन जस्ट डू द टेस्ट. वील टेल यू एट द मोमेंट आप इस ट्रांसपोर्ट पे हैं, एंड देन यू विल हैव अ फेयर शेयर ऑफ आइडिया. देन you can start preparing and eventually book the test after that. So Asra, we have a new question here. yes. All right. So we have YP Empire, and basically he's asking the question, he or she, Australia जाना भाई PT या IELTS या PT एग्जाम इजी होता है या IELTS इजी होता है. Okay. So basically student was asking कि ऑस्ट्रेलिया के लिए which is better और क्या इजी रहेगा, IELTS या PT. Okay. Interesting question. Yes. See, most of the times Australia में universities they accept both IELTS and PTE. And remember, बहुत slight ही variation है PTE में और IELTS में. एक बार what I will suggest you is go through the overview of both the test. IELTS में आपको हाँ थोड़ा in depth ज़्यादा लिखना होता है. PTE में it's not as in depth as IELTS. बट आइल्स में ये फेवरेबल होता है दैट यू हैव अ रियल एग्जामिनर जिससे आप फेस टू फेस बात करते हो. PTE में that is not the case. And again, this again boils down to one fact: which exam are you more comfortable? अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है IELTS एक्सेप्ट कर रही है, अगर आप मेरी सजेशन लोगे तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर IELTS, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है. इट इज वेल एक्सेप्टेड एवरीवेयर, एवरी मार्किंग क्राइटेरिया इज वेरी स्टैंडर्डाइज्ड. बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, देन गो फॉर PT. Personally, for me, I have seen students find IELTS better and easier. But then again, it depends on what kind of a student are you and which is your level of comfortability. So Okay. again, I hope that answers your question. आजरा, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है. इट्स नॉट माय क्वेश्चन बट जनरली हमारे पास जो IELTS PT के बच्चे आते हैं, PT बेसिकली स्टूडेंट्स गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो वो पूछते हैं कि हम जैसे IELTS में 7 बैंड्स बहुत अच्छा माना जाता है, तो वही PT में क्या स्कोर होता है जो एज कंपेयर टू IELTS. इसमें थोड़ा सा आई वांट यू टू गिव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Can you please come again? I couldn't. ओके. सो बेसिकली क्या होता है, IELTS में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि सर IELTS में से 7 बैंड्स चाहिए होते हैं. 7 बैंड्स काफी अच्छा माना जाता है और यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं 7 बैंड्स में इन ऑस्ट्रेलिया. तो अगर दे विल गो फॉर द PT, तो PT में कितना स्कोर चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू 7 बैंड्स ऑफ IELTS? See, again, this will, I would say, because I would say around 90 is what they consider as 7 band score around. But then one thing that you have to be sure is your university accepting it not? Agar university आपकी IELTS accept कर रही हो, again, because this test is very easy to crack, it's just that you need to understand the basics. I have friends who have asked me the same question: should I go for PTE or IELTS? I have given them the same answer. If you are someone who can crack IELTS and you're someone who can understand the pattern, go for IELTS क्योंकि widely accepted है. What if you don't really get the desired admission in a particular university? Since IELTS is more widely accepted, you have more options, right? You have more universities, you have more countries to go to. But okay. Also, you have one compliment, and one of the student, Aryan Khan, he wants to study IELTS from you. Most well, first of all, thank you, Aryan. And yes, you can study and you can take classes from Asra ma'am. You can connect with our admissions team. You can see our contact number there, and you can have a discussion with the admissions team. Check your availability with Asra ma'am, and you can enroll for the classes. Correct. So, any more doubts that you have? Again, there's one thing that I have to tell you. Yeah. IELTS is not a very difficult paper. It's a language-based examination. ये आपकी information, knowledge, ये सब कुछ भी test नहीं करता है. They just want to make sure कि अगर आप एक environment में जा रहे हो जो कि is not familiar to your own, जहाँ हिंदी बोल के आप नहीं आराम से सब पास कर पाओगे, you should be able to do that, and that's the reason why you have to give IELTS. Apart from that, there are some things that you have to keep in mind, and if you just do that,
IELTS is a piece of cake, okay? एक तो ये Mm-hmm. कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए, रिफाइनमेंट हम कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं हो कि आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा है एंड देन यू एक्सपेक्ट अस टू help you with that. Sure, we can help you with the grammar, but if you are someone who's novice, it's going to be difficult for you. The next Exactly. is even in the writing section, and I would really stress on the writing section. A lot of people they don't really get their marks in the writing section. It is only because A, you don't understand the question well. उसने आपसे बोला है to what extent do you agree or disagree, आप लिख रहे हो advantage or disadvantage. तो चाहे फिर आपने 250, 300, 400 कितने भी words लिखे हो, वो आंसर incorrect ही रहेगा. The next is you don't know what are the connectors. Spoken के connectors अलग होते हैं, written connectors अलग होते हैं. You should know the clear demarcation. The next is you should also know कि अगर आप writing के लिए जा रहे हो तो आप idioms नहीं use कर सकते हो. A lot of people they started with, I don't know why they started with a good opener and they include a lot of idioms. That is all not needed in the writing section. So to sum up everything, IELTS follows a pattern. Yes, you have certain tricks that you can definitely use to get a higher band score, but familiarity is something which is it's paramount. You should know that. Okay? Exactly. And one more thing I like to add on this. There are a lot of students, have a query related to writing task 2 essay. कि 250 वर्ड्स होता है तो हमें कितना लिखना चाहिए, हाउ मच वी हैव टू राइट. सो आई लाइक टू ऐड वन थिंग दैट देखो, जो 250 वर्ड्स हो दैट्स अ मिनिमम. यू कैन गो अप टू 270, 280 और 290. ओके, keep this much of range. Why? Because agar, if you write more, the chances are there that there can be grammatical errors, or maybe some spelling errors as well. Okay, how to measure 250 to 290 words that we train in our classes. There's a criteria to measure the word limit, and yes, it should not be less than 250 words. 250 words आप ऊपर जा सकते हो. You can go up to 270 as well. That's completely fine. But yes, उसका भी एक there should be a line. You should not go beyond that, and you should not be less than 250 words. Yeah. Yes, Azra. Right. And even I have some tips for you for the speaking section. अगर Mm-hmm. आपने सोच लिया है कि मुझे 8 बैंड स्कोर ही चाहिए स्पीकिंग में, देर Mm-hmm. आर सर्टन बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू. एक तो जब आप जवाब दोगे, यस नो का जवाब नहीं देना है. अगर मैं रजा सर से पूछूंगी, रजा सर डू यू लाइक कमिंग टू द ऑफिस, एंड ही Yeah. सेज या Yeah. ही सेज नो, तो ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि रजा सर को इंग्लिश आती भी है कि नहीं आती है. Exactly. So ये मुझे आती it's है. very important that you develop the answers correctly. Minimum Mm-hmm. first round में at least 3 sentences आपको minimum बोलने हैं. In the cue card round, you have to speak for 2 minutes. जब तक examiner आपसे हाथ जोड़ के ये नहीं बोलते कि अच्छा चलो we are moving to the next section, don't stop speaking. And Exactly. in the last part जो कि बहुत ज़्यादा discussion round होता है, उसमें आपको हर आंसर को explain करना है. You can Mm-hmm. give an example, you can give your own observation, and इसी part में actually you can flaunt your vocabulary, you can use a lot of idioms, you can use a lot of intonation. This will actually help you get the desired math score. And yes, fortunately or unfortunately, in the speaking section, how well are you using connectors, how well is your vocabulary, how well spoken are you, all of these things are considered when you are someone who is aiming for, let's say, a 7 or above math score. So these are certain things that you can definitely use. Exactly. And Azra, I like to add one more thing. We have a lot of students जिनका हम speaking session start कराते हैं, and whenever we going to, we ask a very first question which comes in the IELTS, like where do you live? तो उसमें काफी students होते थे, they give a one word or two word answer, right? Like they're maybe from Delhi. This is a New Delhi, capital of India, right? So yeah, this is something we have to avoid it, because स्टूडेंट्स को बेसिकली, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स की गलती है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव लर्न एज वेल, राइट? हम भी पहले ऐसे ही थे, कि स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो वन वर्ड और टू वर्ड्स में आंसर देते थे. बट आइल्स में थोड़ा सा यू हैव टू एक्सप्लेन अ बिट. लाइक समवन आस्क्स यू वेयर डू यू लिव, so you don't have to give one, two words or three words answer. You can simply say currently I reside in a society which is based in southern Delhi or whatsoever, and this place, the people in my area, they are very educated. We can discuss about some, we have some basic amenities nearby. The place is, it's a gated community, or it's a great society. So you can say a lot of things about it.
जितना आप बोलोगे ना एग्जामिनर के सामने उतना बेटर रहेगा. अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे 14-15 मिनट्स का आई स्पीकिंग होता है, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई लाइक टू ऐड ऑन इन द स्पीकिंग सेक्शन. बेसिकली ये जो सेक्शन 1 होते हैं, ईच क्वेश्चन यू नीड टू आंसर. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 1, 2 to 3 लाइन्स. ज्यादा छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं. दिस इज अप्लाइज ओनली इन स्पीकिंग इन पार्ट 1. 2, 3 or max by 4 lines. ज्यादा बड़ा नहीं बोलना है because there's a time foundation. And cue card, 1 minute of preparation and 1 to 2 minutes you have to speak. Yes, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो क्यू कार्ड होता है उसमें हमें खुद नहीं रुकना है. ऐसे नहीं कि 1 मिनट हो गया हमने बोल दिया चुप हो गए, बिकॉज देयर शुड बी नो डेड एयर. उसमें एग्जामिनर आपको बोलेंगे, ओके, we are done. Now we are moving ahead with the part 3. So let the examiner stops you. Okay. It depends upon the examiner whether they take it further for 1 minute, more than 1 minute, or 2 minutes. Completely depend upon them. So guys, खुद से मत रुकना, खुद से dead air नहीं आनी चाहिए. इस तरह से आप सैम्पल नोट्स बनाओ जब क्यू कार्ड का प्रिपरेशन करो, जब एग्जाम दो, कि आप 2 मिनट्स बोल पाओ एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ आइडियाज. या, so this is what I like to add on. Yes, I think we have given everything that we had in our treasure trove. If you Exactly. have more questions, you can ask us. And I think you have Yes, told it guys. about the IELTS. If Mhm. you want personalized classes from us, we do offer Mhm. that. Otherwise, you can join our live every day from Monday to Friday, 4 to 5 p.m. Indian time. You can just join our classes. You will get basic insights about IELTS. And it's again free of cost, so you don't really have to spend even a penny from your pocket. Okay, Asra, we are the IELTS trainer, so it's not Indian time, it's Indian Standard Time. Okay, yes, guys. So, yep, thank you very much for joining this this Ask Me Anything sessions. And guys who are really interested to score their desire bands in the very first attempt, again, in the very first attempt, they can connect us anytime. We have discussed about the live sessions demos, which is going on weekdays, Monday to Friday. Okay, we have demos lined up. Demos ka, we are flexible. You can go for demos anytime as per your convenient time. Yes, it's better to have one acknowledgement about with the admission scheme के trainer कब available होते हैं. Yes, you can also get some you know tips from us. Tips are absolutely okay, fine. And किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, like related to IELTS or study abroad. I'm not talking about IELTS segment, but yes, study abroad segment as well. They can connect us anytime, right? We are available to Monday to Friday. Okay, and yeah, Azra, you like to add something? The only thing that I want to add is again, don't be scared of the paper. It's Exactly. not something that is difficult or impossible to attain. Six Mm-hmm. bands का score तो average band score माना जाता है, and universities they usually accept 6.5. It's just Mm-hmm. that if you are not able to get even a 6 band score or let's say 6.5, maybe Mm-hmm. your approach is wrong. Let us help you with that. Mm-hmm. Maybe just make yourself more familiar with the pattern. Make Mm-hmm. use of idioms. Try learning idioms. It will help you not even in everyday spoken English, but also in a lot of competitive exams. Develop habit of reading because it will definitely help you in not only reading section. Mm-hmm. You will be able to actually retain things better. It will help you to visualize things better. These are the things that you can actually use. Azra, I'm sorry to interrupt. We have one important question. There's a student, Kaushal Singh, and he is having a question from you, ma'am. IELTS pass करने का कोई way है क्या? And is UK good for bachelors? पढ़ाई IELTS पास करने का बेसिक वे ये है कि आप पढ़ो उसके लिए. And UK, yes, I would suggest you again, since I'm not an abroad counselor, I Exactly. cannot really comment too much on it, but yes, UK is a safe place if you want to go and experience the culture and also education. A lot of people they prefer to go to the UK, but again, connect with our abroad Exactly. counselors. They can actually help you in everything. Exactly. UK is always a good option for basically for the Indians, and the many people are going. But yes, for more information, we'll suggest that connect with the admissions team, and they will give you more clarity about it.
Yep. And Yes. also, in the next, again, on Friday, next Friday, we are still going to have any Ask Me Anything. So again, on Friday, you can definitely come up with to us, and you can ask any queries that you have related to IELTS, study abroad. And so this is something that I want to tell you. Every Friday, we actually hold Ask Me Anything. Yes, So that's being conducted on weekly basis on every Friday about study abroad, different countries we are catering. Okay, and anyone, any candidate who needs help in financial assistance, because politics is growing day by day, and we have a very strong presence in international market. Right, if any need any financial help assistance or any shortlisting the universities, have a question related to the country, which country suits the best. So that's totally depend upon the profile. And yeah, we have a very good experts available who help a lot of students, and we have great testimonials. We have everything available with us. So I will suggest connect with the team, and they're going to help you out accordingly. Right, Azra? that's correct. Yeah. So any more queries that you have, please ask us. Remember, IELTS ऐसा कोई बहुत बड़ा task नहीं Mm-hmm. है. With the Mm-hmm. right preparation, with the right guidance, you can crack it. It's Mm-hmm. not a very difficult nut to crack. You just need to prepare well. That's it. So Yes. this was all we have. If you have any particular questions, please, now is the time to ask us. Okay. Yes, please, guys. Anyone have any query questions? Please ask on the chat bot of YouTube, and we will be happy to answer. Okay, Kaushal has again another question. I have 6.5 overall, but 5 in reading retake कैसे ले और fees क्या होती है? IELTS one skill retake is something that you can go for. अगर आपने computer based IELTS दिया था पहले, तो you have an option of going for IELTS retake. But I think it has to be done within 14 days of giving the test. It should not be Exactly. beyond that. So अगर ये time frame निकल गया है तो unfortunately for you, you will still have to give the IELTS test. But अगर you are still within the days, go apply for one skill retake and you can just take one skill retake. वही आप अपना reading का जो भी module था, you can just give that reading module once again. Okay, and about the fees, see, fees depends upon place to place. Okay, different place have a different fee structure for one skill retake. So it's better to check the official site of the IELTS before taking one skill retake, and then you can proceed accordingly. You can book your exam accordingly. And if you need help in the preparation of any of the module, you can connect with us as well. We can help you in any particular module as well. We have a lot of students who ask for one skill retake, and we help a lot of students. Yep. All right. So, Aza, I think we are done for today. Thank you very much for this wonderful session. And there are a lot of questions being asked, and I hope we have answered many of the questions. Okay. And yes, next sessions will be soon, and we will keep you posted. We have a WhatsApp group, guys. Register yourself for live sessions where you get notifications related to Waldex, related to IELTS. Okay, and yeah, that's all. Let's wind up, and guys, see you soon. Most probably, we're going to have a next session, next Ask Me Anything, which is going to be happen next Friday. Okay, and we'll keep you posted about it. So yeah. Right. All right, guys. Thank you so much. Thank you very much joining, and don't forget to uh, like and subscribe our button, because if you hit the bell icon and subscribe, you will get more notifications. There are many things coming up related to study abroad, related to IELTS. So yep, guys, catch you soon. Have a great day. Thank you, and have a great weekend. And also make sure that you like the next Ask Me Anything that is going to be held on Friday. And if Yeah. you have more such queries, you can definitely ask any of us. We are here for you. We are going to help you in your journey of preparing for IELTS. Yeah. So I hope you fare well. Exactly. And the next Ask Me Anything session is going to be happen on 19th of September, which is going to be, most probably by next week. And this is related to Germany admissions, like public versus private. The topic will be very important. Public versus private, tuition fees, visas, and we have a great experts available. So, guys, catch you soon.
All right. Thank you so much, everyone, Thank for you. joining. Have a Have great a day. good day ahead.